me right from when I've been 14 or 15 years old, when my mom used to subscribe to Femina, and now I do. And so it's very apt that a magazine like this, that is not just a glamour magazine, it just covers everything, covers so many age groups. It has taken the onus of coming to our rescue with the Femina To Your Rescue app. There are lots of apps that have come out for women's safety, but I think the special features that your app has is the fact that you're armed with information. A lot of apps don't have that kind of information. The articles that you cover in your magazine will be available to you in terms of defense moves, in terms of rape laws, in terms of legalities, step by step, exactly. How to actually register an FIR. So these are, armed with information, you are so much more powerful. So that is one thing that I think is very special with your app, and the fact that there's that siren. Also the ease with which you can alert your contacts, because if you have to if you unlock your phone and get into the app, by the time you've gotten into the app, you wasted a lot of time. So if you even if you have your phone in your hand and you press the power button 3 times without anybody around you even knowing it, I think that's of prime importance, being able to reach your emergency contacts without actually wasting a lot of time. Yeah, you're already jittery. The fact is you can press that button 3 times and get to your contacts and get to the police. So I think your app has some very special features, and I thank you and of course the Mumbai Police for coming up with this initiative and making us feel all the more safe. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mandana. Thank you so much. We took an effort. We took one step ahead, and 7 months back we started adding extra layer of GPS in the vehicle, that in the situation where if a driver will always be traceable, and anybody can reach to that specific transport vehicle. And we are really happy that the Femina mobile app is now in place, and we are very soon going to integrate Ola mobile application with Femina app, so that the safety that is available, the concept of all of you, and besides saying that it's a pleasure being here, it is also an eye-opener that you, the media, the press, is taking such a responsible position about not just the app, but letting people know about how to save themselves. This app is brilliant. Brilliant why? At the touch of a button, I feel safe, I feel protected, and most of all, as a doctor, I've seen traumatized women and children in my practice. I've treated them. But come what may, they would not make a formal complaint anywhere against their perpetrator, against their abuser. This has become my pet peeve. And with this app, we are assured anonymity, which is the best part about this app. Only people concerned will know about my trouble. I don't have to go to the police station to file an FIR. They come to me. I can in some small way save face that I'm the one who has been victimized for no fault of mine. Even today, women take it as their fault, although they are not at fault, they are just the victims. And I'm happy that we have this app, and sure, it's brilliant. Thank you. Thank you so much. Thank you, Android platform. The app offers security on your fingertips and has some very handy features to ensure your safety 24/7. Thank you all. I'd like to thank all my panel members for demonstrating this commitment to the cause of women's safety in India. And finally, Hello, Mrs. Singhati. This question is for the kind of situation that they have been in, and also kind of given you ways that we can come out of it. Like when they shared the stories with you, a general perspective that you got, a few points. You're right. I mean, most of them that have come to me have been abused at home, most of them, women and children, and some on the streets. It starts with eve teasing, which is just shoved under the carpet. And that is the seed which is sown for the criminalization of that person. So in my practice and throughout my life, between Priyanka and I, we have endeavored
to bring out this awareness to everyone I've been in contact with, that you start young, start from children, be it boys, be it girls, all of them are susceptible. Anybody could be a victim today, it's not just the women. Teach them a few safety precautionary guidelines. Do not talk to strangers, do not take a ride with strangers, do not accept gifts from strangers, even if they are daddy's friends. Should teach them difference between good touch and bad touch. I've been to Priyanka's school and I was kind of a counselor in their school, my son's school, and I was given this responsibility. I used to have this talk with the children and the parents that you only can indoctrinate your children. You can't tell a guy once he's already developed this nonsense to change, or a girl to change. It's very difficult. To start young, before their brains have been damaged by the bad internet content, by the bad abusive things. And most importantly, what I was saying is, the women should be given the power, the strength to believe that they will not be uprooted out of their own homes because they are victims. I will not put a woman into a remand house. I will not put my child into a foster home. I will get the perpetrator, the abuser out of the house. He is the one who needs treatment. He is the one who needs help. I would take the man off from his comfortable zone, be it an employer, be it a husband, be it a brother, be it a father-in-law, mother-in-law, whoever. They should be removed from their dignified, comfortable position and sent, at least get psychiatric evaluation and help. They are mentally ill. You put them with criminals, like criminals, they come out hardened, worse, and they become rapists and murderers. We should stop before it goes to this point. It is never too late to start. We should start today, now, with our children. Maybe 10 years, 15 years down the line, we would be able to make a difference. And I think every citizen, is your moral responsibility, not just to look after your own house, but to look after everyone in your neighborhood. Suppose you see your neighbor, the woman in the neighboring house being victimized, she will never come forward and make a complaint against her husband because she's not sure how it will be taken with. The stigma, will she be thrown out of the house, all those things. So the police, I would request, should take cognizance of a non-family member's complaint and keep that family under observation at least. So suppose there's a repeat offense, then you should pick that person out. Not let innocent people be damaged and then it is too late. So this is what has been my job. Thank you. That was really helpful. Thank you so much. बहुत खुशी की बात हो रही है कि फेमिना जैसा रिप्यूटेड मैगज़ीन मुंबई पुलिस के साथ उन्होंने इस ऐप को सामने लाया है, लॉन्चिंग दिस ऐप टुडे। और ऐसे सेफ्टी ऐप्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन इसमें जो खासियत है, जैसे कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल रही थी, कि आप बहुत आसानी से अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स और पुलिस को अलर्ट कर सकते हैं। आप पावर बटन को 3 बार प्रेस कर सकते हैं और
उसके थ्रू आप अपने कॉन्टैक्ट्स तक पहुंच सकते हैं आसानी से, क्योंकि जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हैं तो उस वक्त आप ऐप के अंदर मत, फ़ोन खोल के ऐप के अंदर जाके नेविगेट करके उस पैनिक में शायद कर नहीं पाएंगे. तो फर्स्टली द ईज़ ऑफ यूज़ नंबर 1. दूसरी बात यह है कि इस ऐप में काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन है कि आप एक FIR कैसे लॉन्च कर सकते हैं, लीगैलिटीज़ पर भी इंफॉर्मेशन है, डिफेंस मूव जिन जिन विषयों पर वुमेन सेफ्टी के विषयों पर फेमिना में आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे. तो यू आर्म्ड विद इंफॉर्मेशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस ऐप में, दैट सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऐप्स. वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ एन इनिशिएटिव लाइक दिस, क्योंकि देश भर में ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ने को मिले हैं, देखने को मिले हैं, न्यूज़ पर हम देखते हैं. It's very good that people are coming forward and taking an initiative like this. In this case, Femina Magazine and the Mumbai Police. जी. अभी आजकल एंड्रॉयड, ये जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, बहुत बहुत सस्ते फ़ोन्स में भी मिल सकते हैं. हाँ, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. बस दिवाली आने वाला है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिवाली. कुछ ही दिनों में मैं अभी फ़िलहाल एक शो में बहुत बिज़ी हूँ, जहाँ पे बहुत रिहर्सल करना पड़ता है, पर कम दिवाली वो फैमिली टाइम होता है. हम दिए जलाते हैं, थोड़े से फुलझड़ी के साथ खेलते हैं, बस पटाखे वगैरह ज़्यादा नहीं, और पार्टीज़ इंजॉय करते हैं. दिस इज़ द सीज़न फॉर फेस्टिविटी एंड मीटिंग ऑफ फ्रेंड्स. मैं मंदिरा देवी हूँ और आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. गॉड ब्लेस. We normally say that, we need to do something, someone needs to take a stand, the police needs to do something. So yes, Femina has taken one certain initiative by launching this To Your Rescue app, and I think next thing on my way home, I'll definitely download the app, because you never know when you're going to be at the wrong place at the wrong time, or how you'll be attacked in whatever way. So I think this app will definitely help you in some way. Well, no, thankfully not, but I do have close friends who have, and it's a very sad thing when you hear with someone who's really close to, who's been going through something like this. And yes, I think it's high time that everyone takes an initiative to do something and to be a change. Well, it's been around 1 year now since I won Miss India, and yes, I have been working on my acting. So hopefully, yes, I should be signing a movie by the end of this year. I think it's challenging in every profession, not just Bollywood, but yes, I think the most important thing is that you need to be good and best at whatever you do. If someone is good and he knows that he's good at singing, that's what he's supposed to do, and not do some profession that he's not comfortable with. And Bollywood is something that is very close to me, and I've always looked up to stars and always wanted to be up there. So yes, I'm happy that I'm following my dreams, and my parents and everyone close to me is supporting me for it. Thank you so much. So, Femina To Your Rescue app is an initiative by Femina and the Mumbai Police to basically be at hand whenever you are out and about. So if you're out on the street and it's going to be really late in the night when you will be stepping out, you at least have this handy, you have the confidence to step out. We're not telling women to not dress a certain way or don't go out late in the night. We're saying you go out, you do as you please. We are not going to clip your wings, but keep this handy because this is a stay safe tool for you. And it's easy because it's very simple and navigable. You don't have to reach out to the app, you don't have to tap a lot of buttons. You can directly press the power button 3 times and you can get access immediately to your emergency contact. So as an app, we made sure it's very simple, very navigable, something that you can easily do at hand. I hope a lot of people download it on their Android phones and make good use of it.
Femina as a women's magazine has been around for the last 56 years. You have been seeing stories and episodes where women have been at risk across the country. When the Mumbai police and Femina had a discussion, we realized that we wanted to start an initiative, at least in this city here, to begin with, and that is how the Femina to Your Rescue app came about. Thank you. जी, मैं ओला कैब्स रिप्रेजेंट करता हूं और हमारा इंडिया में सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क है। हम लोगों की मोबाइल एप्लीकेशन और फेमिना ऐप को बहुत जल्दी हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण है और अगर एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर एक सेफ्टी ऐप को जब इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत सेफ़ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। वही एक पूरा कॉन्सेप्ट था जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये मोबाइल एप्लीकेशन को हमारे ओला मोबाइल एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करने की बात करी और इसीलिए हम इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे टोटल डेटाबेस में 35 से 40% महिला यात्री होती है जो कि हमारी ओला कैब में सफ़र करती हैं और उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी को ध्यान में रखते हुए कि महिलाएं हमेशा सुरक्षित महसूस करें जब वो गाड़ी, इस मोबाइल एप्लीकेशन का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है जब ये हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो जाता है। महिलाओं की सुरक्षा, देखिए मेरी माता जी या मेरी पत्नी या आगे चल के भविष्य में मेरी बेटी अगर ट्रैवल करेगी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो सेफ़ हैं, मैं जान सकूं कि वो इस समय कहाँ हैं और मैं ये भी जान सकूं कि जिस गाड़ी में वो सफ़र कर रही हैं उसका ड्राइवर हमेशा वेरीफाइड हो, वो एक सेफ़ चेक पास कर रखा हो। तो एक इंसान होने के नाते भी, मैं बिज़नेस की बात नहीं कर रहा, एक इंसान होने के नाते भी मेरी जिम्मेदारी बनती है समाज के लिए, महिलाओं के लिए जो आधी दुनिया बनाती हैं। और यही सब सोच के हम लोग इस इनिशिएटिव में जुड़े हैं इनके साथ में और आई थिंक इसको और आगे लेके जाएंगे। हम इसमें और नए इनोवेशंस कर रहे हैं। एक लेटेस्ट इनोवेशन हमने अभी करा है कि अब जो ओला कैब के अंदर आप बुक कराएंगे, किसी का भी नंबर ड्राइवर के पास नहीं जाएगा, यानी आपका मोबाइल नंबर कभी डिस्क्लोज नहीं होगा ड्राइवर को, वो आपका नंबर नहीं देख पाएगा। पहले ये होता था कि ड्राइवर के पास है, हाँ ये अब ड्राइवर के मोबाइल ऐप पे नंबर मास्किंग हो जाती है, तो ड्राइवर आपका नंबर ही नहीं देख पाएगा। तो एक जो वापस एक समस्या होती थी पहले कि ड्राइवर नंबर सेव कर लेते थे विमेन का, वो वापस कॉल करते थे, परेशान करते थे, वो भी समस्या अब दूर हो जाएगी। सो हर रोज़ एक नया इनोवेशन हम लोग कर रहे हैं। See, basically me, every day we read news, what is happening, what is not happening. So the thing is, me being a mother of a teenage daughter, definitely I would feel something nice, something femina coming out with something like this, because I know my daughter is safe at one button. So I would love to be associated with such kind of things which is towards women's safety. And definitely I'm very thankful to Femina and the police of Mumbai for coming up with such an app, because it's for every woman. It's not only about my daughter or my sister or my mother. It's everybody's mothers, sisters, daughters, everybody. मैं तो यही सोचती हूँ कि ये ऐप आज के ज़माने में आ गया है जब इस तरीके के क्राइम का इंतहा हो गया, वो बहुत कॉमन प्लेस हो गया और हम लोग भी थोड़े सेंसिटाइज हो गए हैं कि अच्छा हुआ था, किसी को हुआ था, पर जिसको हुआ है उसके लिए तो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी है। और मीडिया का मैं समझती हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल भी है जो उसने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ प्ले करना, कि वो अच्छाई को अच्छा बताते हैं, बुराई को बुरा बताते हैं, ना कि सेंसेशनलाइज करते थे। एक ज़माना था जब येलो जर्नलिज्म जिसको कहते हैं, वो लोग इन चीज़ों को नाटकीय रूपांतरित करके बड़ा ही ड्रामा बना देते थे कि गलत मानसिकता के लोग का दिमाग फिर उसमें से एक्साइट हो जाता था। अब देख रही हूँ कि बहुत चेंजेस आ गए हैं, एडवर्टाइजमेंट्स अपने इम्पोर्टेंस देने लगे हैं अब इस मसले को, और फ़ोन का यूटिलिटी सिवाय बजाय डिसाइड्स कि हम पिक्चर देख रहे हो, गंदी चीज़ें डाउनलोड कर रहे हैं, उसके अलावा कितना चीज़ है। आप गाड़ी में बैठे हैं, आपने ड्राइवर का फ़ोटो खींच लिया, गाड़ी का फ़ोटो खींच लिया, आपने अपने रिश्तेदारों को भेज दिया कि मैं इस गाड़ी में इस वक्त हूँ और यहाँ से यहाँ जा रही, सॉरी। तो वो तो एक लेवल पर, उससे कहीं ऊपर ये ऐप आ गया। इससे है कि आपने एक बटन दबाया और आप सेफ़ हो गए, क्योंकि आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले, आपके नज़दीक के पुलिस वालों को खबर पहुँच गई है
और आपको पुलिस स्टेशन जाके किसी के खिलाफ कंप्लेंट डालना नहीं, अपना फ़ोटो छपवाना नहीं है, पुलिस आपके पास आ गई और आपकी कंप्लेंट को वो इम्पोर्टेंस दे रही है, ये बहुत ज़रूरी। इस ऐप का ये बहुत मेजर एडवांटेज है कि बगैर अपने आप को डिक्लेयर किए हुए, अपना नाम पता बताए हुए दुनिया को मैंने अपना कंप्लेंट दर्ज कर दिया, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। प्रियंका को मैंने बचपने से यही सब चारों पांचों चीज़ें सिखाई थी कि अच्छा क्या, बुरा क्या, किसके साथ आप बात करें, किससे आप नहीं बात करें। तो एक तरह से अपने आप को प्रोटेक्टेड भी रखी वो, और हम भी बहुत एहतियात रखते थे, अकेले उनको नहीं जाने देते थे कहीं। तो ये सब उस समय, क्योंकि ऐसे ऐप नहीं थे अवेलेबल, तो हम खुद प्रोटेक्ट करते थे उनके, हमारे साथ उनके साथ कोई ना कोई हमेशा ही होता था। जी हाँ, प्रियंका तो नहीं आ पाएगी, पर शायद मैं ही जाऊँ उनके पास। थैंक यू। I think it's very nice because it's really the need of an hour. This is what worries the parents when the children are out, and it will really help them. So they will put them at ease. हाँ, वो बहुत बार होता है जब बच्चे जाते हैं और जो तक ट्रैवल कर रहे होते हैं तो दे गेट स्केयर्ड, और उनसे ज़्यादा हम डर रहे होते हैं कि बच्चे अकेले हैं, पता नहीं कैसा है क्या है ना। तो बहुत अच्छा है। उनके साथ मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि ये हॉस्पिटल के साथ भी एसोसिएटेड है, तो जो एल्डरली पर्सनस हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। कभी वो घर में अकेले होते हैं तो कभी कुछ इमरजेंसी आए तो वो किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम हॉस्पिटल से भी अटैच है, ऑल द बहुत एक्सीलेंट, दिस इज़ वेरी गुड। आई एम श्योर this will be very popular, and I request media to put emphasis on this and promote it in their paper.